ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तद्मे स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुसहितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। Welcome all the devotees. You're okay, you want something to sit on? So we are continuing with chapter number 5, Canto first. So last time we had seen how in the end of chapter number 4, so Narada visits Vyasadev after Vyasadev is feeling very dissatisfied, even after putting such great humongous efforts. So now, so the lesson given by Srila Prabhupada is that when someone is sincerely desiring to seek shelter of a spiritual master, so the Supreme Lord arranges. Supreme Lord inspires the bona fide Guru to actually come to the disciple. So had Vyasadev not desired like that, suppose Vyasadev had he thought, okay, I will only contemplate and take out the solution to my problem, then Narad Muni also would not be inspired to come there. But when the disciple or the devotee wants to seek shelter of Krishna and the spiritual master, so Krishna arranges the spiritual master, Krishna inspires the spiritual master. There was this one Mataji or Prabhuji, I don't know, some one of the one devotee in the West. So after in the middle of some program, uh, suddenly His Holiness Radhanath Maharaj, he got up and he went to his room. He said, I need to go to my room. And so he was chanting and offering prayers intensely. So His Holiness Sachinandan Maharaj and Indradona Maharaj and some other uh, senior devotees were there in that program. So then they later on they asked Maharaj, you suddenly went to the room. What happened? And Maharaj said that I actually felt very intensely that uh, my disciple needs me. So then Maharaj was beginning to offer prayers because what had happened was that these some disciples who were there in a car and they had a terrible accident.
and actually, I think two of them died on the spot. So they were in blood, and they were actually praying to Krishna, and they were remembering their spiritual master intensely at that moment. So then Induduna Maharaj and Sachinanda Maharaj also shared that how it has happened with them also. So this is a spiritual science actually. How, like Prabhupada, see, of course, Prabhupada is very pure personality. Prabhupada would say that my spiritual master has arranged this, or my spiritual master is speaking through you. Even sometimes some advice of some ordinary people, Prabhupada would say that my spiritual master is speaking through you. So when a disciple is wanting to actually seek the guidance of the spiritual master, so it is said that even Paramatma can speak. There is a class of His Holiness Radhanath Maharaj on seventh canto, second chapter. Uh, Clear intelligence comes from sincerity. So there he says that when there is access to spiritual master, if one seeks shelter and guidance, then when one does not have, so then Paramatma speaks directly to the person, and person can feel that inspiration. So he says clear intelligence comes like this. So we say the guru is the Bahya Guru and Chaitya Guru. Both are representatives of Krishna. So Bahya Guru is the spiritual master and the Chaitya Guru is Paramatma. So we can see here that because Vyasdeva was very sincere in intensely remembering and trying to seek the shelter of his spiritual master, so his spiritual master was manifested by or inspired by Krishna to go there. Because how otherwise would Narada be able to come there? There was no communication system. So this is in ISKCON, it is called as Paramatma effect. So Paramatma inspires. So, and sometimes we may not be sincere, but Krishna may be very sincerely wanting to take care of us. So then also Paramatma effect happens. So I remember in 2011 Kartik Yatra. So Radheshampur had told me that you should not do any seva during the yatra. You should just focus on hearing and taking association. So uh, but I was asked by some devotees to do transcription seva for Maharaj lectures because in those days, like every yatra, they used to produce a booklet. So at the end, last day of the yatra, after the last class, there would be a thick book in which there would be transcripts of every class. And in those days, Maharaj was like younger, so he used to speak also a lot. You know. And there were only three, four of us in entire among thousands of devotees who knew typing, fast typing. So like as Maharaj would speak, we would. So Gaurang Darshan Prabhu, he asked me that you do this service. So he was also doing, I was also doing, and two more devotees were there. So the problem was that I asked one senior devotee and I asked my mentor also. And they said, yeah, you should do it, this and that. Uh, so I said, maybe we can just ask once Radheshyam Prabhu, because he had told like that. So I said, no, we'll check with him. That is okay, you do. So, so I did actually. In those days, yatras were longer also, like 7, 8 days. I've even attended 12 days yatra with Maharaj in Vrindavan. So So we did already because previously also I used to do like uh, then the booklet was produced also and all that. Then after 1 month of the yatra, 1.5 month, so there was Maharaj Vyas Puja. That year was the last official Vyas Puja celebration in Mumbai, and we had gone to Mumbai, and so we were returning in this train, evening train from Mumbai, and like we were almost like 150 or so brahmacharis. So somehow Radheshampu also like generally he used to travel separately. Then he used to then sometime that somehow that time he came with us and he came in our bogie only. That too in like 6 of 7 of us were sitting in one
that compartment. So he came there and he sat there only. So he was talking to some devotees, and then there was this one devotee who was reading that booklet, Yatra booklet. Vaishnav, so what is this booklet? So because generally, like the senior devotees may not take that booklet. So then he started seeing, oh, very nice booklet. He said, oh, so nice. They are producing transcripts, help to all the devotees. And they highlight the main points. And then as he was giving back, he happened to scan just like shh, and then that acknowledgement page he came to somehow, by Krishna. And there also he saw that paragraph. We heartily thank Achyut Mohan Das. तो वो बोले कि अरे ये तो, वो मुझे बोला अरे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है इसमें, by mistake they've written. So devotees, then other devotees said, और मुझे लग रहा था my God ये तो एकदम बहुत खतरनाक होने वाला है. And in those days Rajeshamp was always upset by default. Like upset means like he was a little different person actually. So वो फिर डिवोटी सारे बोलने लगे अरे प्रभु जी he did so much सेवा this that he would be full time sitting there with typing. So Rajesh was like, huh? You rascal. And then he started heavy heavily chastising actually. मैं बोला my God मैं फंस गया अभी. So sometimes Paramatma may arrange such. So I have experienced many times actually. Right? But if we are not sincere, then Paramatma may arrange sometimes some such situation that our spiritual masters may come to know, and then we may get help, even uninvited help. So, but this is the best actually. What happens with Vyasdev, that he wanted to seek shelter, he wanted to seek guidance, and this is the right way. This is called the favorable or anukul way. More intentional. Bhakti should be intentional, not incidental. Okay? And so Narada Muni appeared there. So this chapter, fifth chapter, it teaches that the essence of this chapter is that jnana and karma cannot satisfy. So you see, Vyasdev had so much jnana, but he was not satisfied. Vyasdev did so much seva also, karma, but he was not satisfied. Why? Because it was not done with pure bhakti. So until unless there is pure bhakti intent at the heart, will not satisfy. Like if I attend Mangal Aarti and I chant my rounds and I'm sitting ahead in Bhagavatam class with the intent that everybody will, you know, glorify me for being a good devotee, then that will not satisfy my heart. But the same Mangal Aarti, Srimad Bhagavatam and Japa, if I attend and do for hearing about Krishna, for glorifying Krishna, for the pleasure of Guru and Krishna, then that endeavor in devotional service will satisfy me. So jnana and karma, sometimes one may do huge karma actually, like huge seva in devotional service. Or one may be very learned in devotional service, but that will not satisfy. So we see that prema bhakti jahan hote avidya vinashaya. So prema bhakti actually satisfies and purifies the devotee, not jnana. So jnana, the role of jnana is to inspire us and bring us to prema bhakti. But it is only prema bhakti which will cleanse the heart and satisfy the heart. So divya gyan hriday prakashito, what is the symptom of that? That the gyan we are having is having divya impact, that our prema bhakti will increase. And then that will cleanse and purify and satisfy the heart. Also in this chapter, we will see that how pure devotional service is highest. And in that also Kirtanam, the anga of Kirtanam is the highest. Glorify Krishna. Actually, even for all of us, Chaitanya Mahaprabhu has said Kirtanam is the process of Kali Yuga. But Shravanam is also emphasized
Because without Shravanam, we cannot do quality Kirtanam, or we cannot do Kirtanam for whole life. See, if we regularly hear Srimad Bhagavatam, and we regularly hear, like, take association of devotees, then you will find that you will get strength to practice chanting of Hare Krishna. You'll get strength to, preach. You'll get strength to, first of all, chant your rounds sincerely. So, like, we have one devotee in California. So he was sharing recently in one class that if I do not take association of devotees for a few days, then he said that then my japa goes to night, like evening, and then if I don't take association of devotees for more than 10 days, 15 days, then it goes to night. And he was telling if I don't take association of devotees very heartily, then my posture changes. So I lie down and chant. So, so he was telling actually that so he is like quite senior person. Matlab he has spent I think 15, 16 years. So so he was telling that even if he takes association of like younger devotees who have spent only 3, 4 years, but he said that by their association, his chanting improves. His then he is able to get the strength to pick up Prabhupada's books. Otherwise, he said Prabhupada's books are there, but I am not able to pick them up. He said the opportunity to serve is there, but I am not able to feel enthusiastic to render some seva. He said I have got money and money gets spent here and there, but when I get association of devotees, then the service attitude, arises in my heart, and I'm able to offer money to Krishna in Krishna's service. And he said my rounds become very pleasant to chant, and I chant in the morning, sitting, walking. When that strength I get from association of devotees. So actually, such a simple thing, no? That so therefore, when we have association in that, when we do hearing, Shravanam, that is what leads to Kirtanam. So although the Yuga Dharma for this age is Kirtanam, equally important is Shravanam. And Shravanam happens in the association of devotees. So therefore, Prabhupada is to say that uh, a devotee who thinks he can practice devotional service without regular association of devotees, he is insane. Insane मतलब पागल, मतलब उसको समझ बूझ नहीं है कैसे, what a powerful thing. Prabhupada himself would say that, oh Srimati Radharani, please protect me, you know, from Maya. So, so actually Prabhupada said that the greatest fear he has is that devotees in ISKCON are not sufficiently afraid of Maya, and that they believe in their minds. So, so therefore we have to follow in the footsteps of Vyasadeva, who is himself the literary incarnation of Krishna. That we do not, that we understand it by jnana and karma, I will not be satisfied, or I cannot rely on my own uh, fertile brain. See, this PM Modi is such a good politician, actually, such a good personality. After decades and decades of exploitation by Congress and so many other people, especially Islamic-minded people, destroying the education system and culture and policies of India. Now this person, this group of politicians have come. I heard that this Shubhendu Adhikari is also Machari only, and he sings also. He chants Hare Krishna and all. May not be like 16 now, but he associates with Gaudiya Vaishnavas. So, uh, but even such people, na, they get. So there were some serious mistakes, blunders done by these people also. May not be with wrong intent. So what happened is, so this is some inside things. Okay, I'm in, I'm in, I'm connected to some very senior devotees who have an internal group. So, so they share some insights on that actually.
because of some surveys I am connected there. I am probably the youngest person there. So they were sharing actually that in the middle, I don't know whether you know, but twice Modi ji spoke in one place, in some places, in some public meetings, that I am like incarnation of God. So why? Because previously he was uh, under the guidance of one saintly person from Gujarat. Okay. So when he was chief minister, I believe for 10 or 15 years in Gujarat, and in 2014 he became prime minister. But I think like 2 3 years back or something, or 3 4 years back, that person left body, that saint. So he was probably from Swaminarayan, and Modi ji used to take guidance from him also. So if you see, like they were showing that till that time he was very humble, and then for some period in his time he didn't have that guidance or that association. So even though he's very intelligent, very cultured, but he took some wrong decisions also that time, and he spoke also wrongly. Of course, it was not because he's quite cultured, so it was not that kind of thing. But people who can understand, they can understand. Now he again is getting some association, it seems. So he's improvising. But you see, this is what happens. So Bhagavatam says that except Krishna and pure devotees, nobody can flourish without good counsel. Counsel matlab COUNSEL. Matlab one should always be having consultation and guidance by some learned or some saintly people in his life. So it comes in Ramayana also. Like Ravana was counseled by his dirty people. Like, see, even Ravana would understand it. That I need counseling. So if you see, he had back and forth meetings. Even the meetings are given who spoke what. In Ramayana, some meetings are explained. Like Ravana holds a meeting. Should I kidnap Sita or not? Then another time he has a meeting with his council members. Should I, like many people are telling that I should return Sita back and I should not fight war with Ram. But the problem was his council members, most of them were very uh, demonic people. So they would give wrong counseling and he would reject the good counseling of Vibhishan. If you see Dhritarashtra, even Dhritarashtra had counsel. So every king in the Vedic times had a council. Like you see, Chandragupta Maurya also had this Chanakya and other councils also. Like for every part, this in India, PM Modi, Prime Minister and Chief Minister also have at least one direct council. I forgot the name. They have one post for that actually. So Chief Chief Advisor. chief advisor, right, right, right. Thank you, Manish. So chief advisor, like they have. So that is chief advisor. But for many different fields, they have advisors. And those advisors are not the people who are affected by those policies or who take part in designing those policies. They only give advice to the this prime minister or chief minister. So this is like any king or leader should have this. It is said. So this is the principle of Vedic life and definitely spiritual life. So what can be a better example than an incarnation of Krishna, like Vyasadeva? So Vyasadeva is showing clearly by his example that I am a fool and I need to be guided. Similarly, you see Sri Chaitanya Mahaprabhu set this example. Lord Ramachandra said this example. Sri Chaitanya Mahaprabhu went to accepted a spiritual master and then went back also. Okay, I am experiencing a lot of ecstasy and pagalpan by chanting this, किवा मंत्र दिला गोसाई, अरे ये मंत्र आपने कैसा दे दिया है ये गोस्वामी. बोलते नहीं नहीं सही है ये मंत्र, आपने आपके ऊपर सही सिम्टम्स आ रहे हैं. Similarly, like you can see doctors, they always tell that please come back in this time. So when I had been taking last 8 or 10 months now this treatment. So I have been going to the doctors and like those. So when you sincerely follow the doctor and take advice ना, I remember कुछ भी पहले के कुछ महीनों में तो कुछ भी चेंज होता था तो मैं तुरंत कॉल करता था, है ना, पता करता था. या कोई दूसरी कंपनी की दवाई मिल रही है तो भी उनसे पता करो. तो वो क्या है, कॉन्फिडेंस भी आता है उससे, क्लैरिटी भी आता है. बहुत बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली.
And then the doctor also feels confident. Oh, this person is following me. He's asking me small things. Even right now, uh, there was this young boy who is like क्या बोलते हैं वो physic physiotherapy type of person. So he comes and he does my treatment. Uh, so वो एक्सरसाइज करवाता है, रनिंग करवाता है, और डाइट के बारे में उसने कुछ बोल रखा है, उस कुछ दूसरे लाइफस्टाइल चीजों के बारे में भी बोल रखा है, काफी चीजें. So like now, so I was not there for few days, last few days. So I report to him that okay, you told me to do this, I do this. I send him photographs, videos also, and I ask him, okay, should I do this? Should I eat this? Should I sleep like this? Which oil should I use? So actually, then he also feels like like I own responsibility for. He says, Prabhuji, you are taking guidance from me. So he's 19-year-old only, but he was trained under some national athletes from age 13 to 18. So he's able to guide very nicely. So he's quite learned in that field. But you see that I saw his own as Radhanath Maharaj. So he was learning harmonium from one person in Mumbai for several months, or even I think 2 3 years he learned. This person would come. Now this person is spiritually a follower of Maharaj. But when he would teach, because of that relationship, Maharaj would actually bow down to him, render some service to him as a guru. You know that? And take his guidance and ask him that please tell me about my performance in Kirtan. So, in fact, it was initially that humility of Maharaj which attracted him to Krishna consciousness. Initially, he was only a teacher from outside. So he would come in kurta pajama, okay, with that typical Indian tilak na, लाल कलर का कुमकुम जैसा, चावल के 2 दाने, और राम राम बोलता था, नहीं तो नमस्कारम बोलता था, ऐसा करके. A typical North India kind of person he was, but he was teaching that music सारे गांव. बट धीरे धीरे महाराज की ह्यूमिलिटी से वो ऐसा हो गया कि फिर वो हरे कृष्णा बोलने लग गया, उसके कुर्ते का रंग चेंज हो गया, और पजामा एक्सपांड होके धोती बन गया. So, but Maharaj even today treats him like his guru, his teacher, and he also treats Maharaj like his teacher. I mean, his guru, like spiritually. So you see that this. Mm, so this is called humility. Actually, humility does not mean Hare Krishna Prabhuji. Well, that may be some bodily problem or some kind of throat setting. Okay. ऐसे लोग को लगता है हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ऐसा बोले तो बहुत humble है. See, somebody say Hare Krishna. That can also be humble actually. Humility means, do I feel the need of Krishna's shelter? That is humility. मतलब मैं छोटा हूँ, मतलब मुझे आवश्यकता है. Humility means, do I feel ecstatic to be dependent on my guru? Do I feel the need of devotees in my life? Do I feel gratitude to those who have helped me in spiritual life? Do I acknowledge that I am struggling with anarthas? No? Do I accept that I have done some mistakes? This is called humility, actually. Do I am I convinced that scriptural knowledge has transformed my life? So humility means this, Prabhu. Humility does not mean a typical kind of external behavior. It actually it actually means I want to seek shelter. When somebody has that spirit, that is humility. Okay. So in this chapter, you find that Vyasdev teaches in an exemplary way that whenever a devotee or disciple faces some challenge in his life, or some dissatisfaction, so two things he should do. One is he should contemplate on what mistake did I do? What did I do wrong? What am I not doing right? Okay, like Vyasdev contemplated. Oh, मैंने ये किया, मैं ऐसा था, लेकिन फिर क्या हुआ? Oh, शायद मैंने ये नहीं किया. And second thing, he should like, seek guidance. Prabhupada says in one purport, uh, consult
consulting with higher devotees or consulting with higher authorities makes any matter perfect. Amazing, na? Prabhupada says one should always consult uh, with someone who can give us better guidance or advice, with higher authorities, Prabhupada writes. That consultation always makes any matter perfect. तो या आप देखोगे डॉक्टर्स भी हैं, वो कंसल्ट करते हैं कभी कभी। कोई केस उनको ऐसा वो लगता है तो अपने किसी इक्वल डॉक्टर से या कोई सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट इज देयर, है ना, लाइक दैट. Okay, so so this is the transition between the chapter 4 and chapter 5. Now let us read. Yes, Paramanand Krishna. So, Pujay, initially you were telling your story and with Radhesham too. So, I just wanted to ask, like, what different could you have done there? I thought it was perfect only. What you could have done? Yeah, I should have separately also maybe during the yatra asked Radhishankar. See, already I was having that doubt that oh, this may not be right because he had told specifically like that. But yeah, of course, our the vice president of our temple, Pune temple, as well as my mentor, my counselor, Revati Prabhu that time. So they told me like that you do. तो मुझे लगा ठीक है, अभी लोग बोल रहे, मैंने बोला आप बात कर लेना राजेश, हम उससे क्या है, वो बोले हाँ हम बात कर लेंगे, अभी आप करो, लेकिन अभी महाराज क्लास शुरू कर रहे हैं पहला. तो आई शुड हैव डबल चेक्ड, ओके, which I did. Next day also I asked. They said, yeah, today we will check like that. But then later on I did not check because of course I had faith in them. And that it's not like they are not faithful or something. They are definitely. But it's a human nature, people forget. जल्दी जल्दी में होता है. और क्या होता है कि देखो, एटलीस्ट आफ्टर द यात्रा आई कुड हैव डन दैट, बट मुझे भी क्या माइंड में लग रहा था कि भाई ये थोड़ा वो नहीं हो जाए, फिर ये जबरदस्ती नाराज हो जाएंगे. तो पहले ऑलरेडी आई डिड वन मिस्टेक. अनदर मिस्टेक व्हाट आई डिड, in order to remain in good books of Radhesham Prabhu, I did not go afterwards also and talk to him about this, which is wrong. So I could have done that, but that desire to impress, see, we should have desire to serve and please, not desire to impress. When we have desire only to impress, we can try to impress. There's nothing wrong about it, but it should not be at the cost of desire to please. So desire to please means there should be sincerity and honesty. Integrity should be there. But yeah, I did not have that. So otherwise I would have. So yeah, that's what I can think of. So, You have any input? whom I am to have an input on this? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो मैंने तो बहुत कांड किए हैं ब्रो, बट आई लर्न मोर फ्रॉम द कांड देन फ्रॉम द भक्ति योगा. नहीं, Okay. आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ. Yes, Srigon. Praji, like when you go through a situation when let's say same example, do you try to tell what exactly happened? Generally, when I come across something, with superior says something, I immediately try to समझाने की कोशिश करते हैं, Praji, like what has. Right, right. But is that mentality is like having humble sometimes, like, or we are telling also it becomes like not humble, we are like that. Yeah, at least you are right, Prabhu. That so what helps me is like मुझे रेवती प्रति प्रभु ने भी एक बात सिखाई थी, अभी मैं आंसर कर रहा था वही बताता हूँ कि कोई भी जब हमें कुछ चेस्टाइजमेंट मिलता है, करेक्शन मिलता है या ऐसा कुछ एडवाइस मिलता है, तो सबसे पहले हाँ बोलना चाहिए. उसके बाद सोचना चाहिए क्या बोला है. सो एटलीस्ट वी कैन फिक्स सम रूल्स फॉर आवरसेल्व्स कि अगर मेरे गुरु कुछ बोल रहे हैं या मेरे सीनियर कुछ बोल रहे हैं, पहले मैं हाँ बोलूं. पहले तो उनके बाद ऑनेस्टली जाऊं कि भैया मैंने ये ब्लंडर किया है,
और उसके बाद हाँ बोलूं पहले, है ना? उसके बाद सोचा अच्छा हाँ इन्होंने ये बोला है, ओके ओके फाइन. So our dharma is to say yes. Prabhupada also writes in one place, in Brahmaji section, I believe in third canto, 29th chapter, or maybe third canto, 9th chapter. I'm not able to recollect exactly. One of the places he writes that Brahmaji told to Lord Narayan, "Yes, sir," and he shook hands. You know? So I think Prabhupada was from British kind of that era, no? So he was like, "Yes, sir," you know. So so Prabhupada says, "Yes, sir." He writes in the translation actually. Can you imagine? It's like, okay, Brahmaji agreed to accept what Lord Narayan was telling him, and he accepted it from heart. Nirvalikena, that is a term which is used without envy or without rebellion. Without rebellion in the heart, without envy, or without, uh, you know, revolting from outside. Okay. So, see, obedience from outside and submissiveness from inside. These two are very important. So, Prabhupada says that even if you do not have submissiveness from inside, at least you should have obedience from outside. That is minimum, rock bottom minimum. पहले यस तो बोलो. मुझे याद है राधेश्याम को मुझे बोले थे कि आप बैंगलोर जाके सेवा करो, पे बहुत आवश्यकता है. तो मैंने बोला यस प्रभु जी. तो बोले नहीं, आप सोच लो ऐसा ऐसा रहेगा ये सब. मैंने बोला यस यस प्रभु जी, वो सब बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे. पहले यस. फिर आफ्टर 1 or 2 days अगेन ही टोल्ड, अरे बैंगलोर में तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, वहां पे तो बस आवश्यकता है. बट अभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, बहुत चैलेंजेस आ गए हैं आपको. यू शुड गो टू यूपी. सो कैन यू गो टू कानपुर इंस्टेड. तो मैंने बोला यस प्रभु जी. फिर वो बोले नहीं नहीं, यू आई वांट यू टू थिंक एंड दिस एंड दैट, दिस फैक्टर दैट फैक्टर. मैंने बोला ठीक है यस प्रभु जी. वो देन ही सेड नो नो, आई वांट यू टू थिंक फॉर 2-3 days, सम टाइम ही गिव मी. आई सेड ओके प्रभु जी. तो मैंने बोला नाउ आल्सो आई एम टेलिंग यू यस, देन आल्सो आई टेल यू यस ओनली. बट बिकॉज यू आर टेलिंग मी टू थिंक, आई विल थिंक आल्सो. And then I came to know later in the evening that some brahmacharis, senior brahmacharis came and told me, "Oh, you are going to Kanpur?" I said, "Prabhuji told me, but he told me to think and tell him." They said, "No, but he announced in our seniors meeting that you are going." I said, "Oh, okay." So actually, uh, I said, "Oh, that's nice, you know." So actually, कैसा है कि from our side, we should first say yes, Prabhu. So sometimes it may be difficult. You know, this Mataji's I heard from this Mataji, it was so nice actually. Mandakini Mataji, right? So she says that I used to pray to Krishna that I want some very difficult service for, I want to do something very difficult for Srila Prabhupada, not just, because Prabhupada has so many needs to spread Krishna consciousness. So she said that I prayed to the deities, I would pray to the deities, please inspire Prabhupada to give me some very difficult service. And then please inspire me to say yes. So then, after I think 1 year or so, Prabhupada told her to, can you go to uh, Moscow, like Russia, and there is my disciple there, Ananta Shanti, and you just go and get married. So she's going to a country she doesn't know of, a culture which is absolutely, she has no idea. See, Russian language is totally different from any other languages. No culture she knows, and Russia is totally cold country. And in those days, it was USSR. It's like, communist regime and iron curtain. You can't even put tilak for entire life. And she doesn't know this person at all. And but she just says yes with a big smile, and she immediately runs to the altar to thank the deities that you fulfilled both the desires. So we should first say yes. At least उतना discipline हम अपने आप को सिखा सकते हैं कि let me do that. So see, we should focus on our dharma. That is more important. What is my dharma? Master. So Prabhu, what I try to do is I try to observe myself, and if I find that ego is there, then I try to humble myself. So, like just few months back, it was in Kartik last, so 2025 Kartik.
So I was talking to Radhesham Prabhu personally. It was around a couple of hours, and there was one situation actually. So Radhesham was telling, no, no, ठीक है, you can only take care of this. Some I don't remember exact conversation, but so I felt actually that time a great need to express that, very clearly that I need. So there is no hesitation. So we should remain like kids. So I started crying actually. I remember tears came my eyes, but that is far better. That problem is because of ego, and especially because of male ego. Uh, we do not we do not admit our vulnerability or our smallness or our need. Then how will we cry out for Krishna as we grow more and more in bodily age? So we have to learn this art of uh, saying yes, and 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 convincing ourselves by even telling to others, like by teaching to others. Yesterday, I was giving one class to some of our US devotees, this Bhakti Sangha group, yesterday evening. So I was telling there that we have to we I was telling them about this, that how Krishna and spiritual master, they love us. They love us very much, and their chastisement or their correction is the greatest blessing we can get in our life. Those are the moments which will be the most enlightening moments. So we should feel dependence. That is why we should draw some lines for us, that when there is confusion in life, I should consult, and I should keep the guidance of superiors, in front of me. Whatever we speak, we should, like, I'm taking this series since last 1 week or so of mentorship principles for our congregation leaders. So yesterday night also we had 8 to 9:30. So I was sharing there that every principle which I am sharing here, so I have a remembrance of learning that from my spiritual masters. So otherwise I would not speak. So in some interactions from them or directly from Prabhupada, I've learned. So this is very important that we start, we inculcate such values in our heart. Because if we do not do it, nobody else is going to do it for us. Who will do it? I mean, who has the guts to change our values or conceptions or our habits? So we have to make some thumb rules for us. Guru says anything, first say yes. When there is agitation or confusion in the heart, express yourselves, do your dharma. you know Another thing I try to follow is write and written, like to my authorities. Now Gopaleshwar Bro is there. So better to share everything and clearly write, express in written, so that there is no confusion, so that we are very particular कि हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ. And like I was sharing some time back with some of our congregation leaders and all the preachers there, that see, this temple does not belong to me. I may be temple president, but I am just Sanrakshak. This temple is as much as yours as it is mine, as it is any devotee's. So who am I to give you permission for any service? This is not supposed to be a bureaucratic, red tape, signature based, somebody's permission based thing that you have to please this guy. No, it's not supposed to be like that. You have to be in his favorite list or something. So we have to, Prabhu, always remind ourselves of the right values and of our dharma and the right principles and the right behavior we should have. Okay, so that we can do it when the time comes. So because Bhagavatam says one should never trust one's own mind and senses and intelligence also. Gita also says, in Gita says in the third chapter also, that in these strategic locations, Maya is sitting. You know this, na? Like, just like how in Kargil war, the strategic locations are there, Tiger Hill and some more hills. So there the enemies would make their, like, first they would conquer that strategic location, because उधर से वो फिर दूसरी लोकेशन को इजीली जीत सकते हैं, आपके ऊपर वॉर, आपके ऊपर गोला बारूद फेंक सकते हैं. सिमिलरली माया क्या करती है, हमारे माइंड और इंटेलिजेंस को कैप्चर करती है. क्योंकि आप इंटेलिजेंस से ही तो पूछोगे, कंसेप्ट इंटेलिजेंस को उसने
है ना वो, और इंटेलिजेंस आपको कन्विंस भी करती है, यू डोंट नीड एनीवन. So therefore we should understand the dharma and the philosophy very very nicely. So that philosophy helps us. This is philosophy of कि I am spirit soul, I need Krishna, है ना. And ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन मुंजितम आग्रह का सुस्ता. इससे हमको समझ में आता है कि मुझे अपना कोटा लेना है, तो सब कुछ कृष्ण का है ना. मेरा परिवार, मेरे टैलेंट्स, मेरा पैसा, मेरा, तो एक्चुअली philosophically we should be clear, then culturally we should make some certain habits and thumb rules for ourselves. Because लोग कब तक चीट करेंगे अपने आप को या परमात्मा को, वो कोई लिमिट ही नहीं है उसका. तो therefore we have to uh, like I think like that, मेरा तो आधे से ज्यादा लाइफ निकल गया ऑलरेडी. See, suppose I live 80 years also, now I am 40 plus. Even if I live 80 years, पहला 15-20 साल तो लाइफ का चला गया, और लास्ट का 20 साल भी लाइफ का कोई, you know body is always like, it's not easy already. So तो हमारे पास है कितना टाइम एक्चुअली. So if I do not change my habits, if I do not become a genuine devotee today, so then what will I, like I'm sharing some contemplation which I do myself. तो जैसे यहाँ पर है कंटेम्पलेशन, ये कर रहे हैं ना व्यासदेव, तो like that we have to be very very honest and contemplative, and in this way practice humility. Because if we do not practice humility, genuinity, Prabhu, by I have seen that by seeking advice, by seeking guidance, we strengthen ourselves actually. It is a misnomer that, you know actually ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं, अंदर से खोखले रहते हैं और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है. When we seek advice, we become very confident, very clear. So like that, some thumb rules can help us very much. Like that, contemplation can help. Like that, sticking to our dharma, and this should be our personal life. We should also have some equals whom we can immediately call up to seek any advice, to seek any guidance. And we should have that kind of relationship with them that they can tell anything to us. मेरे को कई बार मेरे इक्वल बोलता है, अरे प्रभु मोटे हो रहे हो आप, सही करो, अपने आप को संभालो. अरे प्रभु आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हो आप. सो लाइक दे हमको रिलेशनशिप में हमारे सुपीरियर्स और इक्वल्स को अधिकार देना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए बाय आवर बिहेवियर दैट दे कैन स्पीक एनीथिंग टू अस. इवन यंगर डिवोटीज को देना चाहिए कुछ, है ना. ये हमारे यहाँ पे भी हैं कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ दूसरे गृहस्थ डिवोटीज हैं, वो बोल देते हैं जो बोलना है. जैसे मैं अभी रिसेंटली कुछ बोला था, हमारे एक धवल कृष्ण हुआ, उनको सेवा में क्या आप ऐसा करो, तो मुझे अगले दिन बोले नहीं नहीं, मैंने बात किया, मेरे ये दो इक्वल्स है. अब अभी तीनों को मैंने ही प्रीचिंग किया था, मैंने ही काउंसलिंग किया था, लेकिन तीनों ने डिसाइड कर लिया बॉयकॉट करेंगे प्रभु जी को. सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली व्हेन सच थिंग, बिकॉज दैट मीन्स पीपल आर, देयर, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्चुअली, है ना. अभी हमारे वो धवल प्रभु हैं, आलोक निमाय प्रभु हैं, वो तो कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आई है. मेरे मुंह पे बोलते भी करना मत आगे से ऐसा, इस तरह की चीज, किसी पे भी विश्वास कर लिया, ये कर लिया, तुम्हारे कारण ये हुआ है, और सबको बोलते भी हैं. सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज देयर इज इन द सेंटर देयर शुड बी कृष्णा. एंड आई फील हैप्पी कि अरे देखो लोग प्रिंसिपल्ड हैं, वो किसी वैल्यूज पर चल रहे हैं, तो हमें इतना, देन व्हाट टू से ऑफ आवर इक्वल्स और सुपीरियर्स, व्हाट टू से हमको इतना वो करना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप, है ना. नहीं तो कोई किसी को लगेगा कि अभी कोई सीनियर है तो मैं उसके सामने क्लास नहीं दे सकता, या मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता, अरे ये अथॉरिटी है, या ये टेम्पल प्रेसिडेंट है, या फिर ये ब्रह्मचारी है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं थोड़ा ना बोल, ऐसा नहीं होता. यू कैनॉट, सो सी सम, if we do not practice humility, if we do not practice dharma, then these things will remain in talks only. It will remain on paper only. So we have to try to reduce this gap between what we preach and what we are and what we do, especially between what we preach and what we are. So we have to, so knowledge is one thing, but what we are is another thing. So we should try to close that gap, that is called integrity.
Okay. I hope I have not confused you. No, no, Prabhuji. Actually, from the student perspective or the disciple perspective, what we should do, you nicely said. What I understand. But Prabhuji, sometimes like I have seen authorities also, they sometimes like short-tempered, immediately they Yeah. response. Sometimes whenever authority is uh, not very good in Yeah. behaving or gelling, the disciples or the people who are under him will face many troubles, which I am seeing nearby temples. Hmm. Uh, yeah. या तो उस समय क्या सोचना चाहिए कि कृष्णा ने मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए अरेंज किया है, बट इफ इट इज हर्टिंग कृष्णा's मिशन too much or other devotees too much, then we can raise our voice in a respectable way to the right authority, because that system also our acharya made, because we should not get carried away by one person's idiosyncrasy or one person's क्या बोलते हैं जो भी है मतलब selfishness or ego. So that is one problem, is known as Guru Prasad Maharaj says that in ISKCON we have to make the changes of putting right people in the right positions and not expand too much without putting qualified and trained people. Especially जो authority position में होते हैं उनको selfless और निरपेक्ष निरपेक्ष मतलब उनको पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और उनको फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए. I agree with you. This is our home, bro. We have to change slowly, slowly, at least by our example, what we can do. But I'll show you a purport which will give you a lot of solace. This is from ninth canto. See, 9:3:10. Marriage of Sukanya and Chavanamuni. Okay. Says Chavanamuni was very irritable, but since Sukanya had gotten him as her husband, she dealt with him carefully, according to his mood. Knowing his mind, she performed service to him without being bewildered. So this guy was very irritable, very old, and Sukanya was coming from a very great family, young, extremely beautiful. In fact, the initial verses of this chapter describe her beauty. And so she was so cultured and everything. But this guy was like, the Prabhupada writes solid purport. This is an indication of the relationship between husband and wife. A great personality like Chavana Muni has the temperament of always wanting to be in a superior position. Such a person cannot submit to anyone. ना जैसे कभी कभी ऐसा सुपीरियर होता है ना वो whimsical है. Therefore Chavana Muni had an irritable temperament. ना दूसरों को irritate करता था. His wife Sukanya could understand his attitude, and under the circumstances she treated him accordingly. If any wife wants to be happy with her husband, she must try to understand her husband's temperament and please him. This is victory for a woman. Even in the dealings of Lord Krishna with his different queens, it has been seen that although the queens were the daughters of great kings, they placed themselves before Lord Krishna as his maidservants. However great a woman may be, she must place herself before her husband in this way. That is to say, she must be ready to carry out her husband's orders and please him in all circumstances. Then her life will be successful. When the wife becomes as irritable as the husband, not humble, their life at home is sure to be disturbed or ultimately completely broken. In the modern city, in the modern day, the wife is never submissive. Therefore, home life is broken even by slight incidents. Either the wife or the husband may take advantage of the divorce laws. According to Vedic law, however, there is no such thing as divorce, and a woman must be trained to be submissive to the will of her husband. Westerners contend that this is a slave mentality for the wife, but factually it is not. It is a tactic by which a woman can conquer the heart of her husband, however irritable or cruel he may be. See, कैसा कैसा point लिखा है प्रभुपाद ने. Basically, he is glorifying that a woman should be humble, more humble than the husband. Even if husband is very cruel, very irritable, very unreasonable. That's how Chavan Muni was.
In this case, we clearly see that although Chavan Muni was not young, but indeed old enough to be Sukanya's grandfather, and was also very irritable. See, Prabhupada 4 बार लिख दिया irritable. Sukanya, the beautiful young daughter of a king, submitted herself to her old husband and tried to please him in all respects. मतलब उसने अपने ईगो को कितना साइड में रखा होगा ना. Thus she was a faithful and chaste wife. तो ऐसे बहुत सारे purports हैं प्रभुपाद के इस तरह से. तो कैसा है कि बट दिस वी शुड नॉट टेक इट एज एन अथॉरिटी. प्रभु ऐसा नहीं कि अभी मैं अथॉरिटी या हस्बैंड हूँ या लीडर हूँ और मैं अपने जूनियर को बोलूँ देख 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 वाइफ कहीं के या डिसाइपल कहीं के या जूनियर कहीं के, तुझे ऐसा होना है, समझ में आया तेरा धर्म. नहीं ना, ये सी अनलेस वी कैन बी लाइक लॉर्ड राम, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द वाइफ और डिसाइपल टू बी सीता. Okay, we should be humble from our side. This is from our side. Like we should be like that. We should, like Bharat Maharaj pastime is not to tell people, "ए तेरा ये desire है, तू deer बन जाएगा, तू कुत्ता बन जाएगा." ऐसा नहीं कर. ये that is for ourselves. Okay, I can evaluate myself. How am I as a younger person? And even if I am in the position of authority, then there are other things, na? Like for husband, for leader, and for authority, there are other purports also, which says the duties and the responsibilities. उसको seriously लेना चाहिए, है ना, इसको नहीं. सी शास्त्रों में क्या बताया है, वैदिक कल्चर में कर्तव्यों को गंभीरता से लीजिए. ओके, अधिकारों को नहीं. कैन यू रिपीट दिस? एवरीवन कैन रिपीट. कर्तव्यों को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए, अधिकारों को नहीं. अधिकार को नहीं. मॉडर्न डे में क्या होता है, हम उल्टा करते हैं. ये मेरा अधिकार है, यू सबमिट टू मी, यू डू दिस, यू डू दैट. दैट इज नॉनसेंस एक्चुअली. We should do our duties, our dharma, and then leave it on the other person to do his or her dharma. तो इसलिए प्रभु शास्त्र इसलिए पढ़ने चाहिए, है ना. तो देखो मैं ना रिसेंटली एक माता जी को बता रहा था, कुछ बात हो रही थी माता जी प्रभु जी साथ. तो वो माता जी एक सीनियर काउंसलर को बोली कि मैं अपने प्रभु जी के साथ पूरी तरह से एडजस्ट करने को तैयार हूँ. माय गॉड, एक्चुअली आई वाज अमेज्ड एक्चुअली, because this husband's family and this husband are, I mean, they have meat also in their home, and like, and this Mataji is initiated actually, very difficult actually, and typical UP situation. Anyway, I don't want to tell all those things here, but I was so much amazed by this Mataji's attitude. She said that whatever it is, I will adjust because he is my husband, so I will adjust. So uh, so this is actually this. Uh, if anyone follows dharma, na, then actually, so see, I was feeling very upset with that family, you know, that husband and that family, because they are materialistic and all that. But this Mataji was so, I mean, so good, you know, so that so felt like bowing down to her. So it is the principle of the dharma which pleases Krishna actually when we follow. एक डिवोटी थे, तो नाम था ही मांग निमाई प्रभु. ब्रह्मचारी थे. तो एक टेम्पल में हम गए थे, वहां पे जो सीनियर थे ना उनके, जो उनके काउंसलर भी थे, ये हेमंत निमाई प्रभु. I should not have told name, but anyway, he's not famous or something. You may not come to know ever. That is good. So my mistake, I spoke actually. So so actually this, uh, his superior was very angry person, very unreasonable person, very demanding, but this brahmachari was so submissive and so loyal. I said, my God, hats off to you, Baba. So वहां पे कुछ हमारे सीनियर्स थे जो उनको बोल रहे थे कि नहीं, you don't have to be under this guy. But he said, no, Prabhuji, you know, there is no, it's very tough, but I want to, I don't want to be like unfaithful and this and that. वो तो कुछ ज्यादा ही ideal. I was amazed, and he did it also. It's not like he was just talking. Since so many years, he's still doing it. At the same time, see, in this Kali Yuga, na,
we should not try to expect from others like that. We should try to be the right like behavior from our side, right dharma from our side. And this is totally wrong to expect from wife or disciple or a younger person any such kind of behavior. We ourselves are not like that. So, okay, Shri Goenku, does it help you? Yes, yes, Project. Thank you very much, Project. It helps. Yes. So, so we'll so हमारा तो 15 मिनट ही बचा है. But anyway, I also spent a lot of time talking about the chapter first half an hour. But yeah, that was important to give that because acharyas have talked that about this chapter. So anyway, let's uh, read. So should I display or I'll will describe, I'll share, Project. Yeah. okay, first verse. Sut uvacha अथ तं सुखमासीन उपासीनं महर्षवा देवर्षि प्राह वीणापाणि वीणापाणि स्मयन्निव. Suta Goswami said, "Thus the sage amongst the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi among the Brahmanas, Vedvyas." So Narada was smiling because he well knew the great sage Vedavyas and the cause of his disappointment. As he will explain gradually, Vyasdev's disappointment was due to insufficiency in presenting the signs of devotional service. Narada knew the defect and it was confirmed by the position of Vyasa. So you see, Krishna also smiles na, to Arjuna. So sometimes a guru may smile out of compassion and also out of, okay, अरे ठीक है मेरा ये डिसाइपल है या ये जो भी है स्टूडेंट है ये, let me try to help him out. So it is out of affection that a person may smile. It is not out of wanting to tease or something. Okay, let's go ahead. Narada vacha पाराशर्य महाभाग Parasharya Mahavāga आत्मना Bhavata Kachidatmana तुष्यति Paritusyate Sharira एव Atmamanas Eva Va. Addressing Vyasdev, the son of Parashar, asked, "Are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of sensual evolution?" या क्यों वेद व्यास के बच्चे खुश हो गया वैदिक लिटरेचर लिख के, सबको कर्म कांड सिखा के, गधे कहीं के ये इस तरह से बोल रहे हैं. एक्चुअली प्रभुपाद और क्या ये संस्कृत श्लोक है ना, और ये प्रभुपाद भी ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं तो बड़ा वो रहता है अलग देखने में, तो हमको कभी कभी टोन समझ में नहीं आता पढ़ के, तो इसलिए मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा था देसी भाषा में ना. और व्यासदेव के बच्चे हो गया, खुश हो गया, बोल बोल और कर और लिख ऐसे, यू नो. So you'll find similar tone in many places in Bhagavatam. Like Shivji says, Lord Shiva says in 6th canto to Parvati. Parvati ने कर दिया चित्रकेतु को. अभी क्या woman means generally little more emotional. तो शिवजी बोले मेरे को दिक्कत नहीं थी, वो कुछ मेरे को बोला मेरे पास तुमको बड़ा, बट दैट इज वाइफ ना. तो वो भी सही थी अपनी जगह पर, लेकिन वो चित्रकेतु आया बोला अरे थैंक यू माता जी आपने मेरे को कर्ज दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा भक्ति के लिए, मैं हम्बल भी हो जाऊंगा ऐसे ऐसे करके, दिस इज कृष्णास ब्लेसिंग. तो वो चला गया. और पीछे से शिव जी, अब शिव जी के ज्यादा तेज हंस भी नहीं सकते क्योंकि घर गृहस्थी भविष्य अच्छा रखना है, उज्जवल रखना है, तो वाइफ को ईगो मत दिखाओ, है ना. इट्स अ रियलिटी, यू नो. मेरे पापा तो अभी तक सिखाते हैं मुझे. तो इवन आपको मतलब एज अ सीनियर सही रहना है तो ज्यादा काउंसलर्स को उड़ाओ मत, यू नो. तो वो रूठ जाएंगे नहीं तो. इवन मेरा भाई बोलता है कि अरे बच्चे जो हैं, यू नो, बच्चे नहीं हैं तो भी परेशान, आप बच्चे हैं तो भी परेशान, क्योंकि नाक में दम कर देंगे लेकिन आपको उसको बड़ा वो करके ना, क्या बोलते हैं ह्यूमिलिटी से
डील करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो शिव जी कहते हैं उनको, पार्वती को, क्यों देवी, हो गया है ना, किसको कर्ज दे रही थी इसको? अरे ये लोग शुद्ध भक्त है नारायण के, इनको कर्ज लगने वाला। तुम ही परेशान हो गई ना, वो तो स्माइल करके चला गया, तुम उसको गाली दी, कर्ज दिया, और उसको फर्क ही नहीं पड़ा, और तुम अचंभित हो गई ये क्या हुआ, है ना? क्यों फर्क नहीं पड़ा इसको? अरे ये लोग नारायण के शुद्ध भक्त हैं, ये लोग को नरक भेजो, स्वर्ग भेजो, यहाँ रखो, या पशु योनि में डाल दो, तुमने तो बस इसको दानव शरीर, दानव जन्म लेने को श्राप दिया है, इसको तुम नरक भी भेज देती हमेशा के लिए, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा क्या है, पट्टे लोग हमेशा हरे कृष्णा करते रहते हैं, इनको हमेशा कृष्ण का स्मरण रहता है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कौन सी सिचुएशन में जीवन के। नाउ कैन यू गेस विच श्लोक आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? नारायण परा सर्वे न न परा, कुतश्चन विद्यते। करेक्ट, न कुतश्चन। सो अब उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ोगे तो प्रभुपाद ने बड़ा जेंटलमैनली लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन एक्चुअली इफ यू सी द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज व्हाट शिवा इज टेलिंग। थोड़ा सा चिढ़ा के बोल रहा है, लेकिन ऐसा ऐसे ऐसे बोल नहीं सकता ना। मैं एक बार एक प्रभु को मैंने बोला, अरे तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस, तुम्हारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, 50 फोटो लगा रखे हैं वाइफ के, और क्या ग्लोरिफिकेशन डाल रखा है। मैंने कहा, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट सच अ वाइफ इन कलयुग, अमेजिंग प्रभु, दिस इज सो गुड, एक्चुअली यू आर लाइक एंटीथेसिस ऑफ कलयुग लाइफ, कलयुग फैमिली लाइफ, दिस दैट। मैं बोला, प्रभु जी अगर मुझे इसका 10% भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए तो ये करना पड़ता है, यू नो। आज एनिवर्सरी, मैंने कहा तुम्हारी एनिवर्सरी तो ठंड में थी ना, तुम्हारी ठंड के सीजन में मैं आया था तुम्हारी शादी में, तो तुम, ये तो समर सीजन चल रहा है, एनिवर्सरी कैसे बदल गई? नहीं नहीं, हम पहली बार मिले थे गर्मी में, उसकी एनिवर्सरी है। मैं बोला, अच्छा। तो बोला, ये लगाना पड़ता है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी, उसको लगेगा नहीं तो फिर कि मैं वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम इतना वैल्यू नहीं करते? अरे इतना वैल्यू थोड़ी ना करूंगा पूरी, लेकिन दिखाना पड़ता है। देखो, दिस इज गुड एक्चुअली, दिस इज ह्यूमिलिटी, दिस इज रियलिटी। बट इट इज गुड टू डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो मैं आपको क्यों बता रहा था कि शिव जी कैसा बोल रहे हैं कि हे देवी, और वो बोल कैसे रहे हैं, देवी के नाम से उसको बोलते हैं, ऐसे नहीं कि पत्नी बोल रहे हैं या कोई जूनियर के नाम से बोल रहे हैं या फिर स्त्री बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो दिस इज लाइफ फ्लो एक्चुअली। तो यहाँ पे व्यासदेव को नारद मुनि कह रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड बाय आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी और माइंड? जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, मैंने अपने बच्चे को टच करने दिया पंखे को, फिर उसको लगी, तो लाइक दैट समटाइम्स वी हैव टू अलाउ, वी कैन नॉट। जैसे नारद मुनि ने व्यासदेव का फ्री विल किडनैप नहीं किया था कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, गलत है। समटाइम्स वी हैव टू अलाउ पीपल एक्चुअली, ओके, दैट इज हाउ पीपल ग्रो बाय मेकिंग मिस्टेक। समटाइम्स अ मिस्टेक इज वर्थ द लॉस वी हैव। जैसे मैं तो कई बार हुआ है ब्रह्मचारी, आई रिमेम्बर एक ब्रह्मचारी 2012 की बात है, 12 नहीं, 13 की बात है, he was serving under me and he lost 75,000 rupees that time. That was like, today's lakhs and crores for me. वो सुन नहीं रहा था, यंगर डिवोटी को कभी ना गर्म खून होता है, सुनते नहीं है, एडवाइस दो ये करो, फिर क्या, ठीक है भाई करो आप जैसा करना है, खोया उसने। फिर थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है व्यक्ति को, या पहले आ, अभी अपने यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी तुम पहले कुछ एडवाइस दो तो उनको क्या एडवाइस दो, नहीं नहीं प्रभु जी आप, हम कर लेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लो, है ना, आपको ज्यादा वो करने। अरे थोड़ा मैं एडवाइस दूं, लेकिन वो सुनते नहीं टाइम। फिर क्या होता है, बाद में उनको दिक्कत आती है, वो तो अरे प्रभु जी ऐसा हो गया, फिर वो आते हैं तो मैं उनको धीरे से याद, ऐसा शुड नॉट हर्ट द ईगो, मैं तुमको कहा था ना, ऐसा नहीं, दैट इज, सी दैट वी कैन लर्न फ्रॉम निमाई। निमाई taught the lesson to Kashmiri, Keshav Kashmiri, but it not hurt the ego. If you hurt the ego ना, समझा, गधा कहीं का, तो क्या होता है फिर, वो फिर सुनेगा ही नहीं फिर वो, तो ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। फिर बस हमको फिर ध्यान से ऐसे, ठीक है मैं आपको
maybe bro, no problem, you tried your best. Maybe next time you can try कि है ना टाइम पे ही टिकट बुक कर लेना ट्रेन में, जिससे कि आपको सीट साथ में मिल जाए। बेसिकली क्या करते हैं ब्रह्मचारी, आरएसी में आएगा तब टिकट बुक करेंगे। फिर क्या होता है, वो ट्रेन में भीड़ ऑलरेडी रहती है, फिर उनको सीट्स मिलती है इधर उधर। फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का दिक्कत आता है, स्पेशली पीक टाइम्स में व्हेन यू ट्रैवल, भीड़ बहुत होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं ऐसे, है ना। और वो टाइम भी यूटिलाइज नहीं कर पाते, इधर उधर बैठे रहते हैं वगैरह। तो मैं उनको बोलता था टाइम पर बुक कर लो, है ना। अरे प्रभु जी कर लेंगे, आप ज्यादा बोलो मत। मैं बोलता था ऐसी ट्रेन में बुक करो जिसमें, जो स्पेशल ट्रेन में बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको हमेशा रेलवे वाले डिले करते हैं। और तीसरा चीज मैं बोलता था कि बुकिंग कर वो क्या बोलते हैं, ऐसी ट्रेन में बुक करो जिसमें कम स्टॉपेजेस हैं, क्योंकि उसमें वो साफ सुथरी भी रहती है, उसमें ज्यादा लोग भी नहीं चढ़ते, एक्स्ट्रा लोग। बट क्या ड्यूटी तो सुनते का है प्रोएक्टिव प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, प्रभु जी का क्या है। तो फिर कभी कभी ठीक है आप करो, नो प्रॉब्लम। फिर कभी कभी क्या, जैसे अंदर से हमको गुस्सा है, अरे सुन नहीं रहे, उस समय क्या सोचना चाहिए, मैं दो तीन चीजें सोचता हूँ। जैसे मेरे कर्म में जो मेरा भाई है, छोटा भाई, उसका जीवन का मंत्र है भैया के नहीं सुनना का। तो क्या, जैसे मैं उसको समझाता था वो नहीं सुनता था अपनी पढ़ाई में, स्कूल में। अब मैं घर छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया, लेकिन मेरा कर्म तो है ना मेरे साथ। तो अभी वो दूसरे यंगर ब्रह्मचारी करेंगे, मैं करते हैं वो अच्छा, उससे तो मुझे भी हम्बल रहता है, चलो ठीक है। दूसरा चीज क्या है, मैं सोचता हूँ मैं भी तो किया था ऐसा कई चीजें, तो उनका भी हक बनता है ना। और तीसरा चीज मैं सोचता हूँ चलो अच्छा है, गलती करके सीखेगा, इसको कन्विक्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने बोला था तो करो। तो ये चीजें होती है ना। मुझे याद है अभी पिछले 3-4 सालों से हमें ये क्या डोनर्स वगैरह को कभी हमसे गिफ्ट भेजते हैं ना, तो मैं एडवाइस देता था डिवोटीज को, प्रभु ऐसा गिफ्ट भेजो, तुम लोग क्या मॉडर्न गिफ्ट भेजना चाहोगे, फ्लैशी गिफ्ट, ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, डायरी और पेन और वाटर बॉटल और ये सब कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। मैं बोलता था यार थोड़ा तुम ऑर्गेनिक चीजें दो, नेचुरल चीजें दो, यूजफुल चीजें दो। सो सुनते नहीं, मैं भी ठीक है चलो क्या है। इस साल एक भक्त ने सुन लिया, वो भी काफी आर्ग्यू किया, वो यही है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके साथ ही यही है तो मैं बहुत समझाया उसको, फिर बोला नहीं नहीं ऐसा है, फिर अंत में कैसे तो पता नहीं कैसे मान गया। फिर उसने किया, फिर बोलता अरे प्रभु जी क्या बात है, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा आपने क्या बताया था। बोला हाँ आपने किया बहुत अच्छा किया आपने, सही से। लेकिन देखो क्या होता है, एक चीज होती है, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो व्हाट नारद मुनि इज टेलिंग। क्यों भैया, तो ये सार्काज्म है, लेकिन ईगो से नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज आउट ऑफ लव। ओके, तो देखो जहां लव का संबंध होता है वहां अथॉरिटी सबॉर्डिनेट संबंध नहीं रखना चाहिए, दैट इज ऑफिशियल। और उसमें फिर एक बाउंड्री आ जाती है। तो गुरु डिसाइपल हो, या दो फ्रेंड्स हो, ब्रह्मचारीज हो, या पति पत्नी हो, या माता पिता और बच्चे हों। माता पिता और बच्चे में अगर आप, जैसे कई मैंने बच्चों को देखा है बोलते रहेंगे पापा जी पापा जी, ऐसे डरे डरे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं रखना चाहिए। इफ यू वांट टू ग्रो योर किड्स वेरी नाइसली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड इवन फिजिकली, तो वो उनको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए माता पिता से, एकदम द क्लोजेस्ट फ्रेंड दे शुड बी एक्चुअली। सिमिलरली वाइफ, अगर आप अपनी वाइफ को हैप्पी रख लोगे, आपका भविष्य और आपके बच्चे इतने हेल्दी होंगे, आप सोच नहीं सकते। When wife feels like the I am the queen of the home. See, you can see Krishna himself. राधा रानी, अब वृंदावन में जाओगे तो सब क्या बोलेंगे, ये तो राधा रानी का है, वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वर कभी नहीं सुनोगे आप, सुना है कभी टर्म वृंदावनेश्वर, कभी नहीं। लेकिन बाहर, वृंदावन के बाहर कृष्णा इज द बॉस, बट वृंदावन के अंदर एंड कृष्णा का भी बॉस राधा रानी है। तो सिमिलरली यू सी लॉर्ड राम डीलिंग्स आल्सो विद सीता, very exemplary actually, never bossing around. And that inspires a wife to love the husband very much. Because wife is supposed to be protected. Like protected doesn't mean just protected. That is rock bottom minimum. Protected actually means loved so much that वो ऐसी रहे, वाइफ का कॉन्फिडेंस। बच्चों का तो क्या ही कहना, सिमिलरली डिसाइपल भी।
तो ऐसा नहीं कि डिसाइपल को डर लग रहा है कि मैंने गलती कर दी तो अब ये क्या बोलेंगे, बात कर, थर थर कांप रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। तो वी कैन सी प्रभु समटाइम्स वॉइस डिवोटीज ऑल्सो, अगर वो इस तरह के होम बैकग्राउंड से आते हैं तो वो एक सुपीरियर से भी खुल नहीं पाते, क्योंकि उनको वैसे ही लगता है कि जैसे मेरे पापा हैं वैसे ये भी होंगे। तो जबकि उल्टा होना चाहिए। तो प्रभुपाद राइट्स इन द purport, there this was a hint by Narada to Vyasdev regarding the cause of his despondency. Being a great son of a great father, he should not have identified the self with the body. So Prabhupada writes that if one wants to be cheerful, one should be situated in self-realization, which is transcendental to the material body and mind. So actually हमारे जीवन में भी हमें if we are satisfied, if we are situated in very good sadhana bhakti practice na, then you will see we will make the right choices, right priorities in our life. Otherwise, you will see if we are not doing sadhana bhakti properly, you will see we will struggle in making other decisions also, making other priorities also not properly. Because sadhana bhakti clears our mind of so many misconceptions. So that is how we can remain cheerful. Okay. Otherwise, sharir abhimani atma, mano abhimani atma. Yeah, these are given in the shastras like शरीर अभिमानी आत्मा। व्यक्ति अपना शरीर को जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसका अभिमान शरीर पर केंद्रित रहेगा। या मनोभिमानी आत्मा, उसका अपना आइडेंटिफिकेशन मेंटल प्लेटफॉर्म पर अधिक रहेगा। इसलिए इट्स बेटर टू बी कृष्ण अभिमानी आत्मा, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स, द वंस ईगो, वंस आइडेंटिटी शुड बी मोर कृष्णा बेस्ड, एंड फॉर दैट वी शुड डू साधना भक्ति वेरी नाइसली, our hearing, our chanting, our studying of the Bhagavatam. Okay. So anyway, it's 7:15. We will stop here. So, uh, so this chapter is very, very enlightening. Actually, you will see further. Very, very enlightening chapter, and some of the celebrated purports of Srila Prabhupada are there in this chapter, 10th, 11th, and some other purports. And so basically, ahead this chapter will show the value of pure devotional service above everything else in our life, and how that only can satisfy us completely. So this is the, whoever we are, whatever service we may do, whatever relationships we may have among devotees, whatever accomplishments we may have, but how much are we acting for the pleasure of Krishna, pleasure of Sri Chaitanya Mahaprabhu, pleasure of spiritual master, pleasure of Vaishnavas. Okay. So any comment or question before we end? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है? नीरज। हाँ, नीरज बोल। प्रभु जी, एक चीज थोड़ा सा नहीं समझ में आया। आपने बताया कि हमें अपने सुपीरियर्स को प्लीज करना चाहिए और सर्व करना चाहिए, ना कि उन्हें इम्प्रेस करने का वो रखना चाहिए। तो राइट। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन मतलब, जैसे इम्प्रेस मतलब क्या है कि बाहर से, एक मिनट, क्या हुआ? लाग दो। तो धो लेना थोड़ा पानी से, पानी पानी से धो लेना थोड़ा सा। या सॉरी। सो इम्प्रेस प्रभु मतलब, जैसे आजकल का एजुकेशन सिस्टम है ना, इम्प्रेशन वाला है कि मेरे मार्क्स होने चाहिए बस। अभी मैंने कुछ उसको सीखा है कि नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन मैंने असाइनमेंट लिख दिया है ना, टेस्ट लिख दिया है ना, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे को डिग्री मिल जाएगी, उसमें लिखा है मेरा इतना पॉइंट है बस। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने सीखा क्या है। तो आप सुन पा रहे हैं? आपका स्टक हो गया लगता है आपका, नीरज को। इंटरनेट has got stuck, I think. सॉरी प्रभु जी, वो कट गया था।
नो गलती प्रॉब्लम। से नहीं। मैं बता रहा था कि जैसे आजकल का एजुकेशन सिस्टम है ना, तो उसमें क्या है कि मुझे कैसे भी करके मार्क्स लाना, मतलब दुनिया को दिखाना है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं इम्प्रेस करना, कि सब बोले, सब मेरा लोहा माने, हाँ देखो देखो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मैं उस विषय को मैं सच में समझा हूँ, है ना, उसको, उन कॉन्सेप्ट्स को, और क्या मैंने अपने उसको एप्लीकेशन में उसको सीखा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस आजकल इम्प्रेस करना, आप इंटरव्यू भी देने जाओगे तो यू शुड बी गिविंग द राइट आंसर्स, वेदर यू मीन इट और नॉट, डजंट मैटर, यू नो। तो आजकल की दुनिया बहुत बाहरी दुनिया है, सारा इम्प्रेस करने में। जैसे अ, आपको लड़की देखना है तो लोग क्या, लड़की को पहले, मैंने कितने डिवोटीज को भी देखा है, उनको बस बाहरी सुंदरता चाहिए। कितना खोखला बना है आजकल की दुनिया में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम कुरूप लड़की को ढूंढो, लेकिन अगर आपके लिए वो हाईलाइट है आपकी वाइफ, तो यू आर अ फूल एक्चुअली। या फिर वाइफ, या फिर लड़की को, लड़के का केवल अ, वो उसका बैंक अकाउंट कितना है, तो फिर वो अगेन देन द वाइफ इज अ फूल। तो या फिर आजकल के डिवोटीज कैसे ना इम्प्रेस हो जाते हैं कि प्रभु जी को कितने श्लोक आते हैं, प्रभु जी क्या बोलते हैं। मुझे कई बार लोग बोले ऐसा, है ना, अरे प्रभु जी देखो अमोघ लीला प्रभु क्या बोलते हैं, आप भी ऐसा बोलो ना प्रभु जी, सीखो। मैंने, भैया मेरे को नहीं आता है। तो दिस काइंड ऑफ thing ना, people have a lot of external validation, people, lot of external factors, है ना। आपकी वाइफ बहुत अच्छा, उसका फिगर होगा, बहुत अच्छा फेस कट होगा, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं तो आप क्या कर लोगे। खाना बनाती नहीं है, आजकल ज्यादातर वाइफ, इवन डिवोटी वाइफ, बाहर से ऑर्डर करेगी, बताओ, कैन यू इमेजिन। तो और इतना सारा वो सब तो वाइफ शुड नॉट बी, एक एक हस्बैंड मुझे बोला, प्रभु जी मैं शुरू में बस ना अपने वाइफ की सुंदरता पे ही जाता था, तो मुझे बाद में समझ में आया कि असली असली सुंदरता उसका कैरेक्टर है। मैंने उसको गलत बिहेवियर किया शुरू में, कितना, शुरू के कुछ वर्ष, बट वो तो हमेशा मेरे साथ टिकी रही, टॉलरेट किया उसने। तो मुझे बहुत, नाउ आई रियलाइज मुझे बहुत सुंदर वाइफ मिली, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की जो तथाकथित बहुत सुंदर वाइफ थी बाहर से, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी को सुना रही है वो, और किसी को बोलती है मैं बच्चा ही नहीं करूंगी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अरे मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, तीन तीन बच्चे दे दिए मुझे, तीन नहीं, चार चार बच्चे हैं उसके, कैन यू इमेजिन। ऑफकोर्स मुझसे सीनियर है, लेकिन मुझे शेयर करते हैं, मेरे फ्रेंड है अच्छे, इसको में काफी बड़े लीडर हैं। तो मुझे बताते हैं मेरी वाइफ हैप्पीली कुक, इनफैक्ट मेरी वाइफ डांटती है कि बाहर नहीं खाना, मैं कुक करके दे रही हूँ ना आपको। वो बोले हम सबका पेट भरती है, मेरे माँ बाप का, उसके माँ बाप तो अब नहीं है, खैर उसके साथ बाहर रहते हैं, लेकिन वो उसके चार बच्चे हैं और ये खुद ही है, तो पांचों के पांचों पेटू है। तो वो बताता है कि प्रभु मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, सबसे सुंदर वाइफ है मेरी। एक्चुअली क्या होता है कि वी वी हैव टू चेंज अवर परसेप्शंस एक्चुअली। सो इम्प्रेस करने की बजाय ना, लोगों के सब्सटेंस में देखो तुम एक्चुअली, और उनको प्लीज, जेन्युइनली प्लीज करने का प्रयास करो। आप जैसे किसी को झूठ बोल के इम्प्रेस कर रहे हो, आज 2-3 साल इम्प्रेस कर लो, जिस दिन उनको पता चलेगा झूठ बोल रहा था, वो ना तो प्लीज होंगे ना इम्प्रेस होंगे। लॉन्ग रन में हमारी जेन्युइनिटी ही लोगों को प्लीज कर पाएगी, और उसमें हमको भी सेटिस्फेक्शन आएगा अंदर से, कि हम चोर नहीं हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, या एक दिखावा नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे, या मैकडोनल्ड्स वगैरह, ये जो भी हैं, इसमें इम्प्रेस करने के लिए रहता है फूड, बाहर से बड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर से क्या है, पाम ऑयल डला हुआ है, वो मेयोनीज और कितना गंदी गंदी चीजें डली हुई, मीट और ये सब। तो ये इम्प्रेस करने वाला फूड है। बट अगर आप फूड मतलब हेल्दी, जिसमें अकल है, वो पहचानेगा कि हेल्दी फूड, यू नो, हेल्दी फूड होता है। जैसे आप ये क्या, ये एयरप्लेन वगैरह में फूड देते हैं ना वो, अरे यार वो ना, तो माइक्रोवेव ओवन में वो गर्म करके देते हैं बड़ा। और आप देखना जो रेस्टोरेंट वगैरह का फूड है, ये सब बड़ा चमकता है एक्चुअली। लेकिन आप देखो, जैसे एक एक मुझे ब्रह्मचारी बोल रहा था हमारे यहाँ का, यहाँ आश्रम का ही, अरे प्रभु जी अपने यहाँ का प्रसाद इतना सुंदर दिखता नहीं है, थोड़ा डल डल दिखता है सब्जी। मैंने कहा पता है आपको क्यों दिखती है डल सब्जी?
क्योंकि अपने यहाँ ना कढ़ाई में बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई में। बोलता है प्रभु जी लेकिन बाहर तो मतलब ऐसे मतलब सब्जी चमकती है, ब्राइट कलर्स। मैंने कहा एक तो वो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल बड़ा साफ सुथरा दिखता है, लेकिन उसमें गड़बड़ है। और हम यूज करते हैं देसी ऑयल, कच्ची घानी का, डबल कॉस्ट का आता है। ओके, हम जो शुगर यूज करते हैं वो भी ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स कॉस्ट के आती है। खांड यूज करते हैं हम, ऑर्गेनिक चीज यूज, अब वो इम्प्रेसिव नहीं होता, लेकिन वो अंदर से अच्छा होता है। और क्या होता है, जब आप लोहे की कढ़ाई यूज करते हो तो उसमें हीट करने पे लोहा रिएक्ट करता है, और लोहे के कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और आपकी सब्जी में आते हैं, इसलिए वो थोड़ी डल हो जाती है। लेकिन अगर आप पैन में कुक करोगे ना, पैन में, तो देखना बहुत चमकदार सब्जी रहती है, ब्राइट कलर्स रहते हैं। और फिर आप बाहर के पैक्ड मसाले डालोगे, एमडीएच और ये सब, तो उसमें मिलावट आती है। अपन यूज करते हैं कच्चे देसी मसाले। तो मैं बोला भैया पूरा इम्प्रेसिव खाना तुमको खाना है या अपना पेट सही रखना, दैट डिफरेंस इज देयर। तुम इम्प्रेस तो हो जाओगे उस खाने से, लेकिन फिर जलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैंसर हो रहा है बाद में। ऐसे ही आप देखोगे तो प्लास्टिक की बोतल बड़ी इंप्रेसिव लगेगी, लेकिन उसमें कितने सारे माइक्रो प्लास्टिक्स है ना। आपको मटका देसी लगेगा, और वो प्लास्टिक का जो डिस्पेंसर होता है हॉट वाटर कोल्ड वाटर का, वो बड़ा शाइनी लगेगा, लेकिन फिर उसमें वही है ना, प्लास्टिक वाला टच है। तो यही चीज है कि वो नीरज को हमें इम्प्रेस इम्प्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, इम्प्रेसिव है ना। बढ़िया एकदम पीपीटी बनाओ, मान लीजिए क्लास दे रहे हो, बढ़िया इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव कीर्तन करो, बड़ा अच्छा बजाओ, ट्यून व्यून लेकर आओ बढ़िया। लेकिन अंदर से सब्सटेंस मत रिप्लेस करो। इम्प्रेस करने के चक्कर में डिस्प्लीज नहीं करना है, या बस बाहर से दिखा दिया और अंदर से नहीं है। आप अच्छे मार्क्स लाओ ना, एग्जाम में अच्छे से लिखो, लेकिन साथ में सीखो भी सब्जेक्ट मैटर को, है ना। क्या मैं क्लियर हूँ ब्रो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, नीरज को आपको आंसर मिला है कि नहीं है? Priji, he just dropped before 2 minutes. ओ अच्छा अच्छा। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? तो फिर उनको भी हो गया होगा। Yes, yes, Priji. Yes, Pradeep. Okay. We are not against impressing. We should impress, no problem. But more important is we should please. Impressing should be part of pleasing. Should not be a replacement of pleasing. That is the idea. या इम्प्रेस करने के चक्कर में हम झूठ बोल रहे हैं या सच छुपा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो ज्यादा हर्ट करेगा व्यक्ति को बाद में। ओके ब्रो, थैंक यू वेरी मच। अभी बस एक और क्वेश्चन पूछना था भाई, सॉरी लेट हो गया। हाँ अलग से पूछूं या अभी पूछ लूं? बोलो ना, जल्दी बोलो। तो जी आपने बोला था इनिशियली कि हमें जो है सबसे पहले यस बोलना चाहिए, बट अभी आप एक चीज और बोल रहे हैं कि हमें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। So मुझे if we are thinking that we will not be able to do. मैं आपको बता रहा था ना, हमारा धर्म है, पहले यस बोलो। ओके, वो हमारे धर्म के हिसाब से बोल रहा था। इट्स अवर धर्म टू से यस, irrespective of what it is. Okay, unless it is out of line from shastras, then we should say no also, because that is a yes to shastra. That No, is a yes. that is completely correct, Praji. I'm not saying that the superior is telling anything which is against the Shastras. I'm simply saying that we think that we might not be able to do that service according to our capacity. Okay, understood now. So we can say yes, Prabhuji, you are right. I should do this, but I'm unable to do. I'm not having the strength to do. What should I do? Like that, we can submit in that case also. See, army में ना ट्रेनिंग में पहले यही सिखाते सबसे पहले। उनको बोलेंगे यहाँ गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदा 4 घंटा। फिर आके उस सेम सुपीरियर आके बोलेगा अरे सॉरी सॉरी, वहां वहां खोदना था, कि वहां खोदो। तो क्या कर, 4 घंटे से मैं खोद रहा हूँ, फिर धूप में क्या। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसको भर दो अभी। तो एक्चुअली भले ही आपका सुपीरियर बोले वो, जैसे ना, एक बार एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक आर्मी ऑफिसर कारगिल वॉर में, उसने गलत निर्देश दिए अपने सोल्जर्स को, उसके यूनिट में। उसके बोला कि
उसको क्लियरली निर्देश देना चाहिए वहां मारो, वहां ज्यादा आवश्यकता है, उसने कहा वहां मारो। ओके, लेकिन इसके सोल्जर्स ने नहीं सुना। उनको समझ में आ गया कि यार ये गधा है, इसको अक्ल नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिकली वहां मारना चाहिए, और ये बोल रहा है वहां मारो। तो तो उन्होंने सही चीज करी। वो पहले बोले सर सोच लो, ये है, उसको एडवाइस एडवाइस दिया, वो बोला, वो नहीं सुना। फिर वो बोला भाड़ में जा। इन्होंने जो सही चीज थी स्ट्रेटेजिकली वो करी, और फिर वो वाला पार्ट था ना कश्मीर का, उसमें इंडिया जीत गया। मतलब इन्होंने सही किया। और बाद में दोनों का कोर्ट मार्शल हुआ। क्यों? इसका कोर्ट मार्शल हुआ क्योंकि इसने बेवकूफी दिखाई। Exactly. Yeah, sorry for my I am not connected my laptop with charger. So और इन लोग का भी कोर्ट मार्शल हुआ। क्यों? क्योंकि अरे इसको टर्न नहीं होता है क्या ये? It's good for us, Praji. We are able to. या तो वो इन लोगों का भी कोर्ट मार्शल हुआ क्योंकि इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया था। वो कोई ऐसा नहीं बोल रहा था कि पाकिस्तान वालों के ऊपर गोली मत मारो। ऑफ कोर्स कोर्ट मार्शल मतलब क्योंकि उन्होंने दोनों ने इंडिया की सेवा करने का ही प्रयास किया, तो दोनों को बस थोड़ा कुछ पनिशमेंट दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं निकाला वगैरह। लेकिन बेसिकली दे ट्राई टू टीच दिस दैट फर्स्ट यू से यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हाँ, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक और चीज ध्यान रखा करो। अगर आप पहले यस नहीं बोलोगे ना, तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं आपका एडवाइस या आपका एक्सप्लेनेशन। जैसे अभी रिसेंटली हुआ, एक सीनियर है नोएडा टेम्पल से, लोकनाथ महाराज के टेम्पल में। तो उनके अंडर मैं कुछ सेवा कर रहा था, और वो तो उन्होंने मैंने उनको एक मैसेज भेजा कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, ये अपडेट है। तो बोले ये कैसा अपडेट है, ये ऐसा ऐसा ये कैसे है ना। तो मैं सोचा, इनको यार कैसी बात समझ में नहीं आएगी। तो वो बोल रहे हैं तुम गलत हो। बोला, अरे। तो फिर मैंने उनको, फिर मुझे समझ में आया कि इनको मतलब मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल। तो मैंने उनको क्या बोला पता है आंसर में? सबसे पहले मैंने मैं एक्चुअली पहले तो मैंने आंसर लिखा था कि अरे प्रभु जी ये ऐसा ऐसा है, आप समझिए, ऐसे करके। फिर मैं सोचा अरे यार ये ईगो पे जाएगा अननेसेसरली, नो, मेरे से बड़े भी हैं, वो अथॉरिटी हैं, वो लीडर है, और मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ, आई शुड नॉट राइट लाइक दिस। एंड ही इज राइट इन वन सेंस बिकॉज आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड फुल्ली, आई अज्यूम दैट ही विल अंडरस्टैंड। कभी कभी नहीं होता आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में एक स्टेप नंबर एक डायरेक्टली स्टेप नंबर 6, क्योंकि आप अज्यूम कर लेते हो इसको तो इतना तो पता ही होगा। तो मैंने ऐसा ही कुछ किया था। तो फिर फिर मैंने उस मैसेज को डिलीट किया, फिर मैंने वापस लिखा मैसेज, क्या लिखा? यस प्रभु यू आर राइट, आई डिड नॉट, आई वाज रॉन्ग एक्चुअली। एंड देन आई एक्सप्लेन टू इन अ बेसिक वे, सेम थिंग ऑल्सो। देन ही सेड यस ओके नाउ आई अंडरस्टूड। बिकॉज सी इफ आई डोंट राइट, आई शुड बिगिन विथ ह्यूमिलिटी। उससे क्या होता है, वो फिर व्यक्ति आगे की बात सुनता है। नहीं तो मैं शुरू में नो ब्रो जी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, फिर वो क्या आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उसका उसका ईगो, अरे ये क्या होता है, वो अंदर से ले नहीं पाता है व्यक्ति। सी इंटेलेक्चुअल्स को क्या लगता है, आई एम राइट ना। नहीं, यू मे बी राइट इंटेलेक्चुअली बट मोर इंपॉर्टेंट इज इमोशनली या सोशली या कल्चरली, है ना। कुड आई एक्सप्लेन टू यू ब्रो, डिड इट हेल्प? Yes, 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 Pooja, I got it. I completely understand what you're trying to say. तो देखो अभी तो ऐसे ही रहता है कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये 2 दिन पहले की बात है ना, मैं उसको लिख रहा हूँ। और तो इतना सब कुछ समझने के बाद, इतने डिकेड्स के बाद, ये सब भी स्टिल इट्स अ स्ट्रगल होने थोड़ी, बट वी हैव टू कीप करेक्टिंग अवरसेल्व्स। दैट इज वन थिंग, वी हैव टू एडमिट अवर, सी बाय पब्लिकली एडमिटिंग अवर मिस्टेक्स ना, इवन टू आवर जूनियर्स वी शुड एडमिट एक्चुअली। उससे क्या होता है कि हम भी हम्बल रहते हैं और हम सीखते हैं। बाकी क्या है, we have to keep learning entire life in the school. We should always be a student in the school of life. So we may not graduate ever, but at least we'll
will understand the subject matter properly. That is our hope. So he says, Radhanath Maharaj says that Trinadapi Suni Chain is like a goal we may never be able to achieve in our life, because that is in entirety it is the nature of the liberated souls in the spiritual world. But he says if we keep that goal and try to achieve that, at least we'll become a good devotee of Krishna. Amazing, na? So he says ki just like you see North Pole, Maharaj says Dhruv Tara. You see the Dhruv pole, that star, whatever that is called. He says you may walk in that direction, trying to attain that Dhruva star. Obviously, you'll never be able to attain it, but you'll reach North Pole. So if you want to, say you want to go to the extreme of the earth, so you just follow the Dhruva Tara. You may never achieve Dhruva Tara, but at least you'll achieve the North Pole, which was your goal. So he says similarly, we should always aim high and try to correct and improve ourselves. Okay, that at least by doing that will please Krishna. That is the goal of our life. Keep Yes, endeavoring. Prabhu. Hare Yes, Prabhu. Krishna. Thank you, thank you, Bhagavatam Hare ki Krishna. jai. Srila Sure. Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Good, good.